All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, sir. हाँ, कितने बच्चे आ गए? अराउंड 20-ish. बाकी जनता क्या करिए? नाश्ता? I think so. Yes, probably. Probably, sir. बड़े घूमते फिरते टहलते टहलते आते हैं बच्चे. अच्छा, आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे ट्राई करने के लिए वो करे बुकलेट में से? क्या क्वेश्चंस दिए थे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को? मेंस के, एडवांस के, गेट इक्विप्ड के? Yes, sir. तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे आप लोगों ने कि नहीं करे? I don't think. So, like the नहीं कर पाए. this school exams also. स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं अभी. Yes, sir. अभी next week शुरू होंगे. Finals have next week. Yes, sir. नेक्स्ट वीक से स्कूल एग्जाम शुरू हो जाएगा. कब तक रहेगा? 11th March. 11th मार्च तक. तो तुम एग्जाम के टाइम पे तो पढ़ोगे नहीं और अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम के बाद बोलोगे कि एग्जाम हुए हैं जस्ट अभी, सर थोड़ा तो रिलैक्स करो, तो 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा. हमारा empty है एक महीने. Yes, sir. 30th March में भी. तो एमटी में यही तो आएगा. हाँ सर, मतलब So उसके exam पहले के हम बाद. कर लेंगे. Yes. उसके पहले I मतलब think एग्जाम्स के बाद. अभी तक फिर जेई की पढ़ाई का तरीका नहीं समझ में आया. फिर तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई से कुछ होगा नहीं. देयर इज अ प्रोसेस टू इट, लाइक यू have to do the questions, learn from your mistakes, and then you will have the confidence. चलो हम लोग लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इसका डिस्कशन कर लेते हैं. नाउ नोटिस करना, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे अभी तक इन दिस चैप्टर, it used to be the case that we had only one equilibrium to deal with in a question, right? Typically कैसा हो रहा था आपको? in a question you would get like a particular equilibrium, ठीक है, reactants and products के बीच का equilibrium कुछ होगा, and आपको initial amounts का information मिल जाता था, Kc का information मिल जाता था, and आपको equilibrium amounts जो होते हैं, या you can say extent of reaction, that is what you are being asked to solve for. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा तो हम लोगों ने देखा दैट डिस्टर्बेंस भी हमने इंट्रोड्यूस किया. तो अगर लेट्स से इनिशियल अमाउंट की जगह इनिशियल इक्विलिब्रियम है, फिर कुछ डिस्टर्बेंस का डेटा आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको शिफ्ट आइडेंटिफाई करके न्यू इक्विलिब्रियम के बारे में कैलकुलेशंस करनी होंगी. सो काफी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम सॉल्विंग है. There is a systematic approach towards working with such questions that we learned and solved a lot of questions. However, सब में हमने notice किया that there was only one equilibrium that we were dealing at a time. Now, let's expand our scope and talk about simultaneous equilibrium.
That is, two or more equilibrium are present in the same system with one or more common species. And like for simplicity purposes, solid and liquid नहीं होनी चाहिए वो common species, because solid liquid का activity हम लोग वैसे भी constant मानते हैं. तो जैसे आप ये example notice करोगे, in a system you have A plus B giving C, and then C dissociates to give 2D. So together these equilibrium are existing, right? So they are two or more equilibrium in the same system, and they do have a common species between them. So yes, it's a case of simultaneous equilibrium, right? This second example is also a case of simultaneous equilibrium. As you can see, there are more than one equilibrium and there is more than one common species between them. ठीक है, B, C, D यहाँ पर common species है. So that's also a case of simultaneous equilibrium. This last example, there are two equilibrium present, but they don't have any common species. So we don't call it a case of simultaneous equilibrium. ठीक है, दोनों equilibrium exist करेंगे, but एक दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर एक दूसरे को impact करेंगे because they have common species between them. How will they impact each other? That is what we are going to see when solving for simultaneous equilibrium. ठीक है, इतना लिखो. इसके पिछले वाला जो होमवर्क था वो आप लोगों ने करा था कि नहीं करा था? हाँ सर, The उसको first one डिस्कशन हो गया था. Yes, sir. DBB 3738. नहीं, FBO FBS के क्वेश्चंस भी थे Yes, ना? sir. हाँ सर सर डिस्कशन उसका डिस्कशन हो गया. उसका डिस्कशन हो गया था. हाँ सर. What happened? सर DPP का डिस्कशन बचा है शायद. ये इतना सही तो हुआ ना, बाकी बीच में जो FBS, ये इतना ही डिस्कशन हुआ है बस, आई थिंक. हाँ सर. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो आज मैं आप लोगों से फिर क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ. लिखा इतना सबने? So on, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then let's look at the approach that we need to adopt for solving this simultaneous equilibrium. So let's consider an example in front of us. So दो equilibrium है, A plus B giving C, and then say C dissociates to give 2D. ठीक है, इनके equilibrium constants दे दिए. And आपको बोला है that if we begin with 1 mole of A and B each, right, in a 1 liter vessel, solve for what will happen at equilibrium. What will be the concentrations at equilibrium? तो A and B का 1 mole दे दिया है to begin with. अब क्या होगा? A and B react करके C form करेंगे. जैसे ही C form होगा, it will go in the backward direction, also starts to decompose into 2D as well. Right? जैसे ही D form होगा, वो backward जाके C भी produce करेगा. Right? So all the reactions forward and backward are going to run simultaneously. Yes, sir. Yes, sir. And
the equilibriums are going to influence each other because they have a common species between them. So as a consequence, when we start thinking about it, it becomes like a confusing scenario. It becomes like a cyclical thing. यहाँ से C प्रोड्यूस हो रहा है, फिर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, फिर बैकवर्ड जाएगा तो C प्रोड्यूस होगा, यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो फिर यहाँ का अमाउंट बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, and so on so forth. Like you can like get confused between them. Let's try to, let's say ये A का इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, ये B का इनिशियल अमाउंट है, राइट. अब क्या होगा, रिएक्शन होके थोड़ा सा A कंज्यूम होगा, थोड़ा सा B कंज्यूम होगा, राइट. उससे क्या हो जाएगा, C प्रोड्यूस होगा, राइट. फिर जैसे ही C प्रोड्यूस होगा, दैट विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड, राइट. जो C यहाँ पे भी लाइक वही C है, राइट. इट विल स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड. अब उससे वापस से थोड़ा सा A प्रोड्यूस होगा, B प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज D भी प्रोड्यूस होगा, फिर D कंज्यूम होने लगेगा, राइट. उससे क्या होगा, C का अमाउंट बढ़ेगा, C का अमाउंट बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा. तो इट all in all sounds a pretty confusing task. So that is what you need to be aware about and not fall into the trap of. तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने है, both the equilibrium affect each other as they have a common species. Now from a problem solving perspective, don't bother about how the equilibrium is achieved. ठीक है, don't bother about it. Don't try to put your brains into अरे कितना like A और B कंज्यूम होकर C देगा, फिर C वापस पीछे जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते ही रहेंगे. All you need to focus is on the post equilibrium calculation. What do I mean by post equilibrium calculations? वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है. एक बार पहले इतना लिख लो. Yeah, sir. देखा सबने? Yes, sir. Now what you need to do, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में ब्रेक कर देता हूँ so that things are much easier for you when solving for post equilibrium calculations. Step 1, do the mole analysis of each equilibrium, and you can do it one after another. Practically we know that the reactions are going to run simultaneously, but while doing analysis on paper, it does not matter whether you write the reactions ka analysis simultaneously or you do them one after the other. It's perfectly fine. So that's how we are going to proceed. We are going to keep things simple for us. We are going to do the mole analysis of each equilibrium, right? And we'll do it in a successive manner. पहले एक equilibrium का कर लेंगे, फिर दूसरे equilibrium का कर लेंगे, right? We'll keep it very simple. Once we are done with that, then an important step comes where we will need to ensure that concentration of common species is same throughout the analysis. How we will do that, ये मैं आपको example के through ही better बता पाऊंगा. Why will we do that? Because common species
is something that has to be having uniform concentration, like be it equilibrium 1, equilibrium 2, equilibrium 3, जितने भी equilibrium है, अगर उनमें common species है, तो the common species cannot have different concentrations in those equilibriums. It is present within the same system, so it has to have a common concentration, or you can say same concentration throughout the analysis. How we will do it? Of course, I'll explain it to you. And then lastly, once you are done with this, you can solve for the variables using the expressions of equilibrium constant. Itna likho. Then I will further elaborate on this using the example that we have just written above. Yes, I don't. Okay. Now, let's look at the example and follow these steps. So this was the first equilibrium, A plus B giving C, and the second equilibrium was C giving 2D. Now, what was it that was given to you? That we start with 1 mole of each A and B. ठीक है, तो हम लोग इसका 1, इसका 1 एंड C का कुछ भी नहीं है, ये लिख देंगे. फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो C इसमें से X कंज्यूम हुआ, तो B में से भी X कंज्यूम होगा, और C कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? +X. +X. तो ये इक्विलिब्रियम का एनालिसिस हो गया. तो स्टेप 1, डू मोल एनालिसिस फॉर ईच इक्विलिब्रियम. तो हमने पहला इक्विलिब्रियम का कर लिया. अब पहले का करने के बाद में दूसरे पे चलते हैं. तो व्हाट शुड बी राइट हियर? सी के लिए +X. ठीक है, यहाँ पे x लिख देते हैं टू स्टार्ट विद. d तो है ही नहीं. फिर यहाँ पर लेट्स से y कंज्यूम हो रहा है c का. Yes, sir. तो d कितना प्रोड्यूस होगा? +Y. कोफिशिएंट देखो, 2y. 2y प्रोड्यूस होगा ना. इसके एक कोफिशिएंट है, इसका 2 कोफिशिएंट है, तो अगर इसका y कंज्यूम हो रहा है तो इसका 2y प्रोड्यूस होगा ना. Yes, sir. Yes. So we have done step 1. We did mole analysis of both the equilibriums, right? Now, after doing this, we need to ensure that the concentration of the common species is same throughout the analysis. What is the common species over here? C. Yes, sir. अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा हुआ है x minus y, right? So what is it that is going to be the correct one? X minus y. x minus y. ठीक है. अब ये सोचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. एक तो है कि टिपिकली अगर आप ऐसे वन आफ्टर दी अदर कर रहे हो, तो जो सबसे एंड में आपके पास में चीजें आएंगी, ठीक है, दोज आर गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यूज. ठीक है, जो सबसे एंड में आप इक्विलिब्रियम्स पे जाओगे, वहां से कॉमन स्पीशीज का जो रहेगा वैल्यूज, दोज विल बी करेक्ट. और नहीं तो आप कॉमन सेंस लगाओगे. ठीक है, कॉमन सेंस लगाना क्या रहेगा यहाँ पर? बहुत सिंपल है. हमने सी को नोटिस किया, यहां पर सी एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर सी वाई कंज्यूम हो रहा है. तो एक्चुअल में सी कितना होगा? इन द फर्स्ट इक्विलिब्रियम x moles of C are getting produced, in the second one y moles are getting consumed. तो एक्चुअल में C कितना रहेगा? X minus y. X minus y. Right, so it wasn't something which was a very big thing to like discuss or figure out. तो आप consistently
C का concentration x minus y maintain करोगे, like keep it uniform throughout. Now you are done with step 2. Rest is maths. You have two variables and you have two equations. So you use Kc का expression and Kc2 का expression. तो ये दो equation दो variable बन जाएंगे. Of course, don't try to solve for it because it will be a challenge solving for this. Because this is not two linear equations and two variables. दो linear equations और दो variable होते हैं तो बहुत simple है. We know how to solve it very easily. Substitute कर देंगे and आ जाएगा. But these are non-linear equations. ठीक है, you can see the non-linearity. यहाँ पे 1 minus x का square रहेगा, यहाँ पे y का square रहेगा, right? So it is not going to be an easy task. So let's not get into the solving part of the expressions. That is something which we will deal in another time. Abhi, the focus is to be able to do step 1 and step 2 properly. ठीक है, समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2-3 और एग्जांपल्स लेकर इसको प्रैक्टिस करेंगे. लिख लिया इतना सबने? Yes, sir. ओके, तो एक एग्जांपल अब आप खुद से ट्राई करो वेयर यू फॉलो द सेम स्टेप्स एंड कम अप विद द इक्वेशंस. ठीक है, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है. इफ वी बिगिन विद 1 mole each of A and B in 1 liter vessel and the reactions this time are as follows: A plus B is giving C and A is also giving 2D. ठीक है, ट्राई करो. So we have to find x and y. No, you create the equations, don't try to solve for it. Okay. हाँ, मतलब the objective, ultimate objective would be to solve for x and y, but वो solving नहीं हो पाएगी आपसे, मतलब it will be quite difficult. आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो देखते हैं क्या आया. सो आपने क्या करा? सबसे पहले इक्वेशंस लिखा. Yes. Yes, sir. नो 1 nothing. Yes, sir. 1 minus x. 1 minus x. 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 Good. Then you moved on to the next one. 1 minus x. Uh-huh. Nothing. Uh-huh. 1 minus 1 x. minus 1 x minus minus x y. minus y. Good. 2y. 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 Like I hope understand 2y. Why? Because coefficient 2. Sir. So this is step 1. Now before moving, we need to ensure what? Concentration. Concentration of the common species is same throughout. So A is that common species. Equilibrium 1 में minus y. Minus y रहती है. है ना, यहाँ पर x कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे y कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअल में A कितना रहेगा? 1 minus x minus y. 1 minus x minus y.
है ना, यहाँ पर x कंज्यूम हुआ, यहाँ पे y कंज्यूम हुआ, तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन A का रहना चाहिए 1 - x - y. So now once you have done that, you can write the expressions of the equilibrium constants. ठीक है, of course no need to solve for it right now. Approach समझ में आना चाहिए. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इसमें you can do the calculations actually. अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. लिख पा रहे हैं हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हुए? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं भी आप लोगों के साथ में लिख लेता हूँ. ठीक है, काफी सिस्टमैटिक सी अप्रोच है. किस तरीके से प्रोसीड करना है? Start the music. 8 नथिंग. Yes, sir. फिर So, 8 sir, minus बोलते जाओ. 8 minus 1. 8 माइनस, अच्छा तुमने लाइक C के चाहिए बोलते तुम क्या? हाँ ठीक है, मैं टिपिकली वेरिएबल्स प्रेफर करता हूँ. so मैंने variables दिए. ठीक है, 8 minus x and 8 minus 2x. 8 - 2x समझ में आया ना? 2x क्यों है? Yes, sir. Yes, sir. What will be over here? 3. 3. 3x. ठीक है, then 8. 8 minus 2. ठीक है, 8 भी लिख सकते हो. I don't mind if you are writing 8 over here as well. That's okay because initial से वैसे भी we don't like get bothered about, हमें equilibrium से मतलब है. But मैंने कैसे बोला कि मैं one after the other कर रहा हूँ. ठीक है, Yes, sir. one after the other करने के लिए फिर मैं यहाँ पर 8 - 2x लिखूंगा. What about D? यहाँ पे 2 ही रहेगा sir. 2. What about E? Nothing. 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 Then
8 8 minus minus 2x minus 1. 8 minus 2x minus y. Then 2 minus 5. 2 minus y, 2y. 2y. Correct. Okay, फिर next पे आते हैं. So 8 minus 2x minus y. This was 8 minus x and nothing. है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर 8 minus 2x minus y minus 3z. minus 3z. Okay. 8 Then minus x minus 2z. 8 minus x minus 2z, 4z. 4, sir. 4z. ठीक है. So this was step by step analysis. However, we need to ensure that the common species का concentration is same throughout. So let's look at A. पहले रिएक्शन में x कंज्यूम हो रहा है, तीसरे रिएक्शन में 2z कंज्यूम हो रहा है. तो कितना अमाउंट है A का एक्चुअल में? 8 minus x Minus x minus 2z. 8 minus x minus 2z. 2z. ठीक है. B के बारे में बात करी जाए, 8 minus 2x minus y minus 3z. यहाँ पे 2x कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे y कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर 3z कंज्यूम हो रहा है. तो एक्चुअल में जो b का अमाउंट है दैट इज 8 minus 2x minus y minus 3z. Yes. Yes, sir. We keep that consistent throughout. Now we can solve for the variables. So यहाँ पर we are given the information about the moles of C, E and F. So 3x is equal to the moles of C, 2y is equal to the moles of E and 4z is equal to the moles of F. तो यहाँ से x, y, z का वैल्यू मिल जाएगा बहुत easily. You substitute that and you get the values of k's. Yes. ठीक है. समझ में आया सबको? Yes, sir. Acha, now you have actually studied what it is like to solve for the case of simultaneous equilibrium. However, there is a common doubt which students generally ask while solving for the case of simultaneous equilibrium, which is I was hoping कि तुम लोग पूछ पाओगे, but किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? Any fundamental मेरे question? को एक डाउट आ रहा है, सर मुझे थोड़ा भी डम है पर. नहीं, बोलो बोलो. सर सारे एलिमेंट्स अगर कॉमन एलिमेंट्स हुए तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सर सेम ही रिएक्शन हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा. हाँ, वैसे तो देखो इट इज हाईली अनलाइकली कि कोई ऐसी चीज Yes, sir. सारे के सारे स्पीशीज कॉमन हो. ठीक है, बट इवन इफ देयर आर मेनी कॉमन स्पीशीज कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं. ओके सर. और कोई डाउट किसी के दिमाग में आ रहा हो? सर लिमिटिंग रिएजेंट का. लिमिटिंग रिएजेंट मतलब यहाँ पे तो क्या है कि जो भी रिएक्शन होता है, राइट, अब उसमें हम लोग फोकस नहीं करते हैं लिमिटिंग कौन है, हाँ सर. क्योंकि शिफ्ट होना है फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में तो अकॉर्डिंगली लाइक कंज्यूम या प्रोड्यूस लिख देंगे हम लोग. यस सर. सो यहाँ पर जो कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स का वो कुछ इस तरीके से आता है दैट व्हाट इफ वी कंबाइंड एंड सॉल्व्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है A gives B plus C, B gives C plus D. It's a case of simultaneous equilibrium. Yes, sir. Now, one of the things that can be done is, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, if we start with 1 mole of A and
पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो you might be of this opinion that let me combine the two reactions, right? B cancel out हो जाएगा, A gives हाँ सर 2C plus D आ जाएगा, यस and then I can do the analysis 1 0 0 1 minus Z 2Z Z, and जो equilibrium constant होगा, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था that when we add the reactions the equilibrium constants get multiplied. हाँ सर तो इससे मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा Yes. Z का वैल्यू आ जाएगा, है ना? यस सर Also looks like fair enough, हाँ सर right? But मैंने यहाँ पे मना करा, like that is what I have started with the note as that don't combine simultaneous equilibrium, because by doing so we have made a blunder. What is that blunder? सर if we Sir, do B it individually then actually जो B के moles होंगे वो about 1 minus x होंगे और second वाले में 1 minus x minus y है तो फिर difference हो रहा है थोड़ा. Is that one of the reasons? हाँ, so when you solve it as per the proper method that we have adopted, concentration. ठीक है, तो 1 0 0 1 minus x x and x, है ना? Yes sir. जो अपन ने अभी सीखा है प्रॉपर मेथड, अगर मैं उससे जाऊंगा तो मुझे रियलिटी पता पड़ेगी 1 0 0 1 minus x x and x, then this is x x 0, फिर ये x minus y x plus y and y, right? Yes sir. I will keep b का concentration same throughout, x प्रोड्यूस हो रहा है y कंज्यूम हो रहा है, तो b कितना रहेगा? X minus y. x minus y. c के लिए x यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, y यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली में c कितना रहेगा? X. यहाँ पर x X plus प्रोड्यूस हो y. रहा है, यहाँ पे y प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल c इज X plus y. X plus Y. y ना. तो दिस इज द मेथड दैट वी हैव लर्नड. नाउ कैन यू सी इन द अबव मेथड हम लोगों ने क्या अजम्पशन ले लिया या क्या गलती कर दी? वी अज्यूम्ड x इज इक्वल टू y. Yes sir. हमने b को गायब भी कर दिया ना. हाँ sir. Yes. वी अज्यूम्ड कि b है ही नहीं. ये तो गड़बड़ हो गया ना. Yes sir. Yes. Yes sir. कोई गड़बड़ नहीं. सॉरी, वो बीच में कुछ डिस्टरप्शन आ गया था. सो समझ में आया गलती क्या हुई यहाँ पर? Yes sir. वी अज्यूम्ड कि यहाँ पर भी है ही नहीं, तो दैट वाज अ मिस्टेक. ये नहीं करना चाहिए था अपने को. ऊपर कंबाइन करने से हमने ये अज्यूम कर लिया कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ उतना कंज्यूम हो गया, बट ऐसा नहीं है. वी डिस्टिंक्टली कैन सी that x and y will be different values and there will be some b in the system. इस इक्विलिब्रियम में a b c d सारी स्पीशीज प्रेजेंट रहेंगी, है कि नहीं? Yes. Yes sir. Yeah. तो ये आप अच्छे से लिख लो. Start by putting this note that don't combine simultaneous equilibrium before solving. ठीक है, highlight the before solving part. After solving भले ही आप फिर multiply कर सकते हो, I don't mind, but before solving you should not do it because then you take an incorrect assumption. ठीक है, तो इसको लिखो.
so could you scroll down? So can you please scroll down? ठीक है, कंबाइन करने के बाद आप एनालिसिस कर लो, सॉरी एनालिसिस करने के बाद आप कंबाइन कर लो, आई डोंट माइंड। जैसे आपने यहाँ पर ये एनालिसिस कंप्लीट करके ए का इक्विलिब्रियम 1 के K1 का एक्सप्रेशन लिख लिया, K2 का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब अगर आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करके K1 K2 को मल्टीप्लाई करके लिखना चाह रहे हो, आई डोंट माइंड, दैट्स जस्ट सिंपल मैथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दैट इज फाइन बाय मी। ठीक है, बट डोंट कंबाइन देम बिफोर द एनालिसिस, देन यू आर मेकिंग दैट इनकरेक्ट assumption। समझ में आया? Yes. ठीक है, now with this done, we have completed our chapter. Of course, the question of how to solve for such simultaneous equilibrium, okay, that is going to be a learning, that is what we are going to focus in the next chapter, because the next chapter आपका रहेगा ionic equilibrium, उसमें primarily questions are going to be of simultaneous equilibriums। ठीक है, एक सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें एसिड डाला, बेस डाला, सॉल्ट डाला, लाइक कुछ कुछ आप मिक्सिंग मैचिंग करोगे तो उससे क्या होगा, एक ही सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे, एंड Yes, sir. you will follow the same consistent problem solving approach and arrive at equations. How to solve these equations will be what you will be learning in this chapter। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी जस्ट नोटिस करना, लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग टू यू हाउ इट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया है पीएच क्या होता था, फॉस्फोरिक एसिड। Yes, it's a measure of acidity. ठीक है, तो इससे बेसिकली यहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं कि in indirect way it is asking you what is the minus logarithm of H plus का concentration। Yes, sir.
सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इस सोल्यूशन के अंदर. तो अब हाउ यू गो अबाउट वर्किंग ऑन इट इज आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि H3PO4, ठीक है, it is going to give H plus. It is going to give H plus in the following manner. It is going to dissociate into H plus and H2PO4 minus. ठीक है, then H2PO4 minus is going to further dissociate into H plus and HPO4 2 minus. ठीक है, as per another equilibrium constant. Then HPO4 2 minus is going to further dissociate into H plus and PO4 3 minus as per another equilibrium constant. So you can see this is becoming a case of simultaneous equilibrium. Yes, sir. Yes. हाँ. So अब आप कैसे डील करोगे इसके साथ में? How would you deal with it? So we use a normal approach. 0.1 0 0 0.1 1 minus x, x, X x, X x, X 0, 0. Yeah. अच्छा, 0 x X minus minus y, Y X plus x Y plus Y y, ठीक है. and y, Y x plus X y, plus Y nil, 0 y Y minus minus x plus X y plus Y minus plus and Z. z. ठीक है. Then you will ensure concentration of common species are same throughout. So let's say पहले मैं H plus के बारे में बात कर लेता हूँ. तो actual में H plus कितना होगा? x plus y plus Plus y z. plus Plus z. Y plus Z. X plus Y plus Z. पहले से X बना, दूसरे से Y बना, तीसरे से Z बना. तो actual में H plus जो है X plus Y plus Z रहेगा throughout. मैं ऐसे लिख दूंगा. Yes, sir. अच्छा. X minus y. x minus y. X produce हो रहा है, Y consume हो रहा है. तो ये Yes, sir. H2PO4 minus ion will be X minus Y. Yes. Is there Yes. everywhere common species that is present? Y HPO4 HPO2 minus ये भी common species है ना. इसको भी Y minus z. Y minus Z. और कोई बची है species which is common? No. No, No, not common. ठीक है. So now we are done with step 1 and step 2. अब this is the equation forming that will happen. K1 will be equal to X plus Y plus Z into X minus Y upon 0.1 minus X. yes, sir. Will be X plus Y plus Z into Y minus Z upon X minus Y. Yeah. And K3 will be X plus Y plus Z into Z upon Y minus. Minus z. The thing is कि आप ये manually solve कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. It looks like 3 equation 3 variables, but you are not going to be able to solve for it. ठीक है. Manually नहीं कर सकते. हाँ, of course, let's say if you were given access to say some kind of software like MATLAB, Scilab, right? Mathematical tools जो रहते हैं जिनमें आप equations डालो और वो फिर आपके लिए solving करते हैं, then तो जो अगला chapter है वो exist ही नहीं करता as a new chapter. Ionic equilibrium would not be a new chapter as such because each and every question of ionic equilibrium can be solved by these same basics and fundamentals that we have learned in this chemical equilibrium chapter. ठीक है. इनफैक्ट आप एनसीईआरटी नोटिस करोगे तो एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है कॉल्ड इक्विलिब्रियम. Yes. ठीक है. देयर इज नथिंग लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम अलग से एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम अलग से, बिकॉज द कोर कॉन्सेप्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम. अब होगा क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने एज अ अलग चैप्टर आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, it is because of the fact that almost every question there is a case of simultaneous equilibrium, and it is expected from you to be able to manually solve all of this. ठीक है. अब
That is why the next chapter is going to be a bit more extensive, because you are going to learn about the techniques, the approximations that can be used to solve such questions. Okay. Yes, sir. So what are the techniques? यहाँ पर जैसा आप नोटिस करोगे इस एग्जाम्पल में आपको जब डेटा दिया जाएगा तो यू विल रिकॉग्नाइज दैट K1, ठीक है, दिस विल बी समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 3 या 10 की पावर माइनस 5 के ऑर्डर का होगा ये, ठीक है. दिस विल बी अराउंड 10 की पावर माइनस 8 के ऑर्डर का, दिस विल बी अराउंड 10 की पावर माइनस 11 के ऑर्डर का, ठीक है. दीज आर द वैल्यूज दैट यू विल सी. सो यू विल find that based upon this an approximation can be understood that x will be much greater than y, will be much greater than z. Yes, sir. Like पहले स्टेप से आने वाला h plus will be significantly more, ठीक है. दूसरे स्टेप से आने वाला will be even lesser. Like यहाँ पे वैसे ये छोटा k है तो इससे थोड़ा सा h plus आ रहा है और थोड़ा सा H2PO4 माइनस आ रहा है. अब वो जो थोड़ा सा H2PO4 माइनस आया what is this nonsense happening today? ठीक है. अभी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पर as you can notice that based upon the data that will be given to you, ठीक है, ये approximation hold करेगा तो अब आप यहाँ पे solve कर पाओगे. अब you can write K1 x plus y plus z को आप क्या लिख पाओगे? x minus y को भी आप x लिख सकते हो Yes, Yes. sir. और ये 0.1 minus x हो गया. K2 को आप लिख पाओगे x plus y plus z को x, X, y minus z को y, Y, and x minus y को x. K3 में भी x plus y plus z को x, z being z and y minus z. Y. Now this is something which you can very well manually solve. Yes, sir. Yes, sir. So that is what you are going to now see in the upcoming chapter. So इसमें x भी बहुत हो सकता है ना, फिर x को भी इग्नोर कर सकते हैं. हाँ, इसमें आप ये भी एक अप्रोक्सीमेशन ले पाओगे क्योंकि ये जो k का वैल्यू है बहुत छोटा है. तो Yes. even you can further simplify rather than going about solving the quadratic. You can even use an approximation as x into x upon 0.1. ठीक है, x will be Yes. much less than 0.1. ठीक है, तो यही सब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे. समझ में आया? हाँ, sir. Yes. So that is the background to your next chapter. Now, as I have requested you to do questions parallelly and we have not been able to do, तो अभी मैं हमारा क्लास का टाइम यूटिलाइज करके आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज इट इज extremely important that you learn from the questions also. There are things which you can only learn while you are going to solve problems. Now homework 1 तो हमारा हो चुका है. That is something which we have done and discussed as well. I am assuming everyone is clear with the doubts that came in there. हाँ, sir. Second homework जो मैंने आपको दिया था इसमें से आई थिंक FBO के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे बट आई थिंक FBS के नहीं कर पाए थे या कुछ ऐसा आप लोगों ने बोला था. हाँ, बट sir. जो भी है इसका डिस्कशन हमारा नहीं हुआ था. Yes, sir. ठीक है. नाउ इसका डिस्कशन बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज इसमें देयर आर क्वेश्चंस व्हिच हेल्प यू बिल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. इट विल हैव सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि मैं थ्योरी में आपको नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, दोज आरंट समथिंग व्हिच कैन बिकम पार्ट ऑफ योर थ्योरी. दोज आर लर्निंग्स दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम क्वेश्चंस ओनली. ठीक है. So let me make you solve some of these questions here itself and
rather than getting to the final answer abhi, ठीक है, because I am going to use the precious class का time into all of this, so I will not be actually getting into the end solving, like the answer matching, which you should always do. You should not leave the questions till the end and let the answer, as in you should always get the answer and match the answer with what is given in the booklet. बट अभी मैं वो नहीं करूंगा, अभी मैं आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड उनकी अप्रोच डिस्कस करके एंड तक के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, सॉल्विंग वाला पार्ट वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है. So I'm going to make you practice some of these questions from this homework only. तो FBS से पहले करते हैं, FBS 12 to 37. Okay. So let me put across the questions which I commonly believe are doubts that students have, and they have additional learnings involved with them. Okay. इस क्वेश्चन का सोचो क्या कर सकते हैं. So simultaneous. नहीं ऐसा साइमल्टेनियस नहीं है, अलग अलग है. लाइक क्वेश्चन में अच्छा ओके. एक ये मैग्नीशियम जो है वो कॉपर 2+ को रिड्यूस कर सकता है, ये इसका जिसका भी रिएक्शन केल which will remove cupric ion from the solution. remove cupric ion मतलब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए रिएक्शन. हाँ सर. Yes, sir. Yes. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होगा? ग्रेटर एक्सटेंट का ग्रेटर अल्फा. Yes. यस सर. ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टकट है, आई थिंक मैंने पहले भी आपको हाईलाइट करा था. सिंस द स्टोइशियोमेट्री इज सेम फॉर बोथ द रिएक्शंस, है ना, ये हमारे लास्ट होमवर्क में डिस्कशन हुआ था. सिंस द स्टोइशियोमेट्री इज सेम फॉर बोथ द रिएक्शंस, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर के implies greater alpha. यस सर. तो यहाँ पर बिटवीन द टू किसका के ज्यादा है? First वाला. राइट. सो मैग्नीशियम will be able to remove more Cu2 plus than what Fe will be able to do. Yes sir. यस सर. Sir. इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं करनी थी आपको. You just need to ensure that सही से आ पा रहा है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो. Is this understood? Yes Yes, sir. sir. यस सर. सर डाउट्स वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है करंटली. अच्छा, हाँ यस. अभी ठीक है. यस. Yes, sir. Okay. Now let me put across another question.
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. So question 16 FBS का था कि FBO? FBS Okay. ऑप्शन. So let's that is the news of the hour today going on. Yes sir. तो यहाँ पर while looking at the question, what is it that we understand? Partial pressure of I2 is 0.075. हाँ, मतलब मैं मेरा जो तरीका है वो फॉलो करता हूँ. I2 gas is giving 2I gas. Start, reacted, produced and equilibrium. अब ये क्वेश्चन में जैसे आप पढ़ोगे तो लर्निंग्स जो है वो क्वेश्चन से ही आने वाली है. What is it that is there at the start? So the expected pressure. The expected pressure. ठीक है. अब ये चीज क्या है? This is like English. To be honest, this is more about the language. This is not something which I can be teaching you कि अच्छा अब आपको इसको कैसे like कभी expected pressure आ जाएगा तो उसको start pressure लिखना है, right? ऐसा थोड़ा ना, मतलब I can make you write in the notes. Yes sir. Something which you learn
while solving questions and your ability to comprehend the information. So expected pressure was 0.074 and the actual pressure was 0.112. 0.112. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, this is what your expected pressure was 0.074 and जो actual pressure है वो क्या होगा? Will it be this or will it be the overall pressure at equilibrium? Overall pressure. Overall pressure. Right, overall pressure होगा. ये भी common sense हो गया ना, because you can notice that the value is 0.112. It is certainly greater than 0.074. Yes. Right, equilibrium पर I2 का खुद का प्रेशर तो कम हो जाएगा. It will be 0.074 minus x. ठीक है, तो how can it be 0.112? Right? Yes. यानी कि ये जो information दी है that the total pressure will be equal to 0.112. Now you can solve for x Yes, sir. and then accordingly get the value of Kp. Right? Kp will be 2x ka square upon 0.074 minus x. Okay, of course, the solving isn't pretty, the data isn't pretty. Exam में आपको data अच्छा मिलेगा, but I hope आपको concept समझ में आया हो. Yes, Yes, sir. sir. Okay, let's look at another question. यहाँ पर मैं एक और piece of information देता हूँ that P is the total pressure at equilibrium. ये जो P यहाँ पे लिखा है,
कुछ आ पाया? Method I think. See, you don't have to like look at the formula and then start thinking from the formula perspective. You can fall back to the basics that you have learned. What are the basics that you have learned? PCl5. पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं. Yeah. ठीक है. Yes, sir. फॉर्मेट फॉलो करते हैं. Initial pressure. Start, reacted, produced and equilibrium. ठीक है. अब आपके पास choices रहते हैं. What are the choices that you have? You can do mole analysis or you can do partial pressure analysis. Right? Those are choices that you have. Yes, sir. That choice is something which is driven by the data that you are given. So when you look at the data that you are given total pressure, you are given Kp, you are given alpha, right? तो यहाँ पर से I think the equation जो अपने को strike करता है, ठीक है, would be something in this manner. Kp and P total को relate करता हुआ equation याद है आपको कौन सा था? Yes. KX. Right? ये strike करना चाहिए. अगर नहीं करा है तो it's okay. That Yes, is the sir. learning from the questions that we have, as I said. कि this should be of use. ठीक है. Now, if this is of use, what is it that I would want to look Mole at? analysis. है ना? Kp है, P total है, delta Ng दिख रहा है. Kx के लिए what is it that comes to your mind? ठीक है. Mole. Mole Do analysis. mole analysis. Yes, sir. Okay. So what do I do with? Start with what? C. So one. यहाँ पे no hard data Yes, so you can start with one. of moles. ठीक है. If I was doing pressure analysis, I would have not wanted to start with 1 atm because pressure का ऐसे capital P करके दिया हुआ है ना symbol. Yes. Yes. तो यहाँ पे moles का नहीं दिया है तो moles के लिए I will be okay. ठीक है. 1 से start कर देते हैं. Then alpha is the degree of dissociation. Yeah. तो ये minus alpha plus alpha plus alpha ऐसा लिख दूंगा मैं, Yes. Yes. है ना. अब यहाँ से आपको दिखेगा Kp will be Kx. Kx will be alpha upon total moles. Moles upon total moles. ठीक है. Raised to the power of 1 raised to the power of 1 upon 1 minus alpha upon 1 plus alpha raised to the power of 1 into P Yes, to sir. 1 raised to the power of delta Ng. तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी आ गया. अब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा. Yes. ठीक है. It was something that we had done in notes also. So there was this example Yes, sir. जहाँ पर अल्फा और पी टोटल रिलेट हो रहे थे. राइट. तो वहां पे हम लोगों ने यही करा था. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये क्वेश्चन है.
राइट. इन क्वेश्चंस में जब आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो हाउ डू यू रीड दिस? N2O4 is 25% dissociated at 1 atmospheric pressure. PCl5 is 10% dissociated at 1 atm, right? Percentage dissociation at 0.1 atm या 0.4 atm, right? ये जो questions हैं इनमें notice करना, what are these? These are pressure at equilibrium. Yeah. ठीक है, not initial pressure. ठीक है, that is a very common mistake which students make when they try to solve such question. ठीक है, जैसे आप 35th क्वेश्चन ट्राई करोगे तो उसमें you will start writing the equation N2O4 giving 2NO2 and then start में आप लिख दोगे 1 atm, 1 0 then 1 minus x 2x ऐसा कर दोगे, बट वो गड़बड़ हो गया ना. मतलब अगर आप ये कर दोगे, ठीक है, लेट्स से यू टुक दिस चॉइस 1 0 देन इक्विलिब्रियम पर क्या लिखोगे 1 minus x 2x, तो ये गड़बड़ हो गया ना. हाँ सर. Yeah, sir. ये चीज 1 atm बोली जा रही है, ठीक है, नॉट द स्टार्ट थी. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फा और पी टोटल के बीच का रिलेशनशिप यूज करना है. तो जैसे अपन ने ऊपर वर्कआउट करा, ये आपके लिए हेल्प करेगा. अपन ने क्लास, ये वाला तो जैसे क्लास नोट्स में ही करा था. दिस वाज समथिंग ऑफ एन एग्जांपल दैट वी डिड इन द क्लास नोट्स. मैंने आपको यहाँ पर विजुअलाइजेशन भी हेल्प किया था, हेल्प विद विजुअलाइजेशन ऑफ दिस एज वेल. याद आ रहा है? हाँ सर. Yeah. हमने इसको मोल एनालिसिस से भी करा था, व्हिच वाज एक्चुअली द बेटर वे टू डू यस इट. सर. Yeah. पार्शियल मोल प्रेशर, एनालिसिस से वो अल्फा मिल रहा था, तो अल्फा Yes. सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में इनपुट करना था. है ना? करेक्ट. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ट्राई दिस क्वेश्चन.
आया कुछ? सर दो सर हाइड्रोजन के मोल्स में प्रॉब्लम हो रहा है. 2 मिनट. ओके. तो अप्रोच वही है जैसा अपना था अभी. Yes. Yes, sir. CO gas plus 2H2 gas giving CH3OH gas. Right. Yes. Start 0.1. 0.15. ठीक है. Then उसके बाद बोला जा रहा है कि hydrogen is introduced till the total pressure is this much. So we don't know how much hydrogen is introduced. Let it be A. Don't hesitate to take variable. Yes. Yes, sir. Then इसमें से कुछ X react होगा, इसमें से कुछ 2X react होगा, तो ये X produce हो जाएगा. Yes. तो इक्विलिब्रियम पे 0.15 माइनस एक्स, a माइनस 2x एंड ये x रहने वाला है एंड x इज इक्वल टू 0.08 है ना, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर. Yes. The other equation that is of help to us is that p total सर which is इसमें भी रिलेशन यूज करना है क्या? दोनों का. हाँ बोलो क्या तो इसमें भी केसी और केपी का रिलेशन यूज करना है क्या? कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पर मैंने तो करा मोल एनालिसिस. ठीक है, तो मोल एनालिसिस से आई शुड बी एबल टू गेट केसी. केसी विल बी x upon v divided by a minus 0.15 minus x upon v and a minus 2x upon v का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आप kp निकालोगे, kp will be kc into rt की पावर डेल्टा mg. राइट, यहाँ पर r का वैल्यू 0.0821 यूज करना रहेगा. टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है 750 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा mg? -2. -2. तो इससे आपका kp का वैल्यू आ जाएगा, है ना. ये और x तो पहली क्वेश्चन से आ गया, दूसरा कहाँ से आ जाएगा? ये 8.5 विल बी टोटल मोल्स. टोटल मोल्स कितने रहेंगे यहाँ पर? 0.15 प्लस a माइनस 2x, ये टोटल मोल्स हो गए. -3x. नहीं, प्लस x और माइनस x Oh, का sir. Yeah, sir. 0.0821 into 750 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 लीटर. तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनसे आप सॉल्व कर लोगे x और a को. उससे आपको पुट करके यहाँ पे केसी के पे आ जाएगा. ऑफ कोर्स सॉल्विंग वाला पार्ट इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. एफबीएस के क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं, बट आपके लाइक you don't have to skip them, you have to solve for them because you are bound to make a lot of careless mistakes here. कोई यहाँ पे वॉल्यूम लेना भूल जाएगा. ठीक है, तो आपको तो आंसर मैच करना ही होगा. ठीक है, only when you match the answers you will know whether you have followed the steps properly and not made any careless mistakes. Often what happens is students conceptually clear हो जाते हैं, उनको ये सब समझ में आने लगता है. They are quite thorough with the approach, but they end up making small time careless mistakes, and that is why their answers don't match, and that is what happens to them in the exam if they don't recognize it while solving.
ठीक है। समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. ओके, देन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। Okay, let's see if you are able to get an answer to that. इस क्वेश्चन का बताओ। इसमें KP कांस्टेंट रखना है। हम्म
हम्म कुछ आ रहा है? Doing so. इसमें upon reading the question we recognize that it is the case of initial equilibrium, then disturbance and new equilibrium. Yes. Right? इतना तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ ही रहा है हमें. Yes. Yes, sir. Okay, so then let's follow the format that we have studied. We write the equation. We write initial equilibrium. Right? यहाँ पर दिया हुआ है that this is 0.38 atm, this is 0.4 atm, and this is 2 atm. So this is all in a 3-liter flask. Okay. Then there is a disturbance. What is that disturbance? Hydrogen is removed. कितना removed? We don't know. ऐसा कुछ information लिखा नहीं है. तो ठीक है. -x है ना? बाकियों में तो कोई disturbance नहीं हुआ है. Right? जो instantly change किया है वो H2 का ही change किया है. Then shift होगा. Where will the shift happen? Forward. नहीं, backward. Backward होगा ना. If the reactant sir. is Lesser removed, moves. right? So shift happens backward. यानी कि ये -2y plus 3y and plus y होगा. Yeah. So Yes. as a consequence, you will have a new equilibrium. So that will be 0.38 plus y, 0.4 minus x plus 3y and 2 minus 2y. Right? यहाँ से जो kp आएगा और यहाँ से जो kp आएगा वो सेम होगा. Yes, sir. Right? So that will be your first equation, and the second equation would be the new equilibrium per partial pressure of N2. Right? That is 0.38 plus y is equal to 0.45 given है. Yes, sir. तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल से you can solve for x and y. Once you have solved for that, you will get the answers also. Right? याद आया अप्रोच कैसे करते थे हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. ठीक है. तो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी. ठीक है sir. Yes, sir. Sir, एक second. सर हम लोगों को पार्शियल प्रेशर कंपेयर करके सिर्फ y सॉल्व होगा ना, x नहीं सॉल्व होगा. x के लिए हम लोग को दूसरे इक्वेशंस लेने पड़ेंगे ना. हाँ तो ये इससे y आ गया यस सर. और यहाँ से kp इक्वेट करेंगे ना. मैं इधर से भी और इधर से भी kp इक्वेट करूंगा ना. हाँ सर. तो दैट विल बी माय. हाँ यस सर. मतलब मैं यहाँ पर इक्वेट कर दूंगा 2 की पावर 2 अपॉन 0.38 and 0.4 का क्यूब will be equal to 2 minus 2y का स्क्वायर अपॉन 0.38 plus y which Yes. is equal to 0.45 into 0.4 minus x plus 3y का क्यूब. तो यहाँ से x आएगा ना. यस सर. अंडरस्टूड सर. Solving won't be pretty, but yes, we will be able to get the answers. हाँ सर. ये वाला ट्राई करो. सो ये भी FBS है. नहीं ये गेट इक्विप्ड में. ओके सर. गेट इक्विप्ड का सिंगल चॉइस करेक्ट है.
So equilibrium pressure मतलब total pressure 3 P naught है. करेक्ट, गुड. तो आई थिंक अब आपको लैंग्वेज रीड करनी आती जा रही है. Yes, sir. Yes sir, English में. दिस इज द पी टोटल एट इक्विलिब्रियम. थोड़ी सी हेल्प करूं? हाँ जी, थोड़ा सा. सो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया कि देयर इज सम इनिशियल इक्विलिब्रियम, Yes, sir. Yes then sir. some disturbance, right, and then a new equilibrium will come. Yes. तो हमारा फॉर्मेट रहता है इनिशियल इक्विलिब्रियम, राइट, फॉलोड बाय डिस्टर्बेंस, फॉलोड बाय शिफ्ट, फॉलोड बाय न्यू इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अब इनिशियल इक्विलिब्रियम का आपको डेटा जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है. आपको ये दे दिया है कि जो टोटल प्रेशर है वो 3 P0 है और जो Kp है वो 0.5 P0 है. तो यहाँ से आप आई थिंक निकाल सकते हो कि इनिशियल डेटा क्या रहेगा. X plus y 3 P. x plus y is 3 P0 and y square upon x is 0.5 P0. Yes sir. Yes, sir. इससे आप सॉल्व करके बता पाओगे that x will be 2 P0 and y will be P0. Yes. Yes, sir. ठीक है, थोड़ी सी सॉल्विंग है बट वी शुड बी एबल टू गेट व्हाट इज देयर इनिशियली. नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए आ रही है. अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज बीइंग हाफ्ड, तो उससे डिस्टर्बेंस क्या होगा ये हमने नोटिस किया था
while doing questions in the notes also that disturbance होने पर अभी वॉल्यूम चेंज होने पर अब्रप्टली पार्शियल प्रेशर्स चेंज हो जाएंगे, Yes, sir. पार्शियल प्रेशर्स डबल हो जाएंगे, हाँ sir. वॉल्यूम हाफ implies प्रेशर डबल हो जाएगा. ठीक है, मोल्स में अचानक से चेंज नहीं आता है, ठीक है, बट पार्शियल प्रेशर तो डबल हो जाएंगे. Yes. Yes, sir. 4p0 और 2p0 हो जाएगा. Where will be the shift based on our knowledge? Lesser. यहाँ पर lesser gaseous moles की तरफ, यानी कि backward shift हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes. You could have done the detailed analysis also. यहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर न्यूमरेटर में है, और अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, मतलब Q इज मोर देन K, तो शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा. Yes. यानी कि ये -2p और ये +p रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. How do I solve for this small p? So KP. It will be same. KP will be same. Using Kp, correct. तो मेरा 2p0 minus 2p का स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा अपॉन 4p0 प्लस p इज इक्वल टू 0.5p0. तो यहाँ से मेरा p आ जाएगा. दैट इज नॉट माई आंसर. माई आंसर इज एक्चुअली, जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर. ठीक है, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. So that will be 4p0 plus p plus 2p0 minus 2p. So you substitute that over here and get the answer. Clear है? यहाँ पर कैसे करना था? Yes. So this was a question related to the disturbance. ठीक है, and the way in which you are going to be able to answer is follow the format. This is going to be important. Yes, sir. Okay, it will help you develop the thinking for that question. चलो एक और थोड़ा सा difficult question try करते हैं. See if you are able to work on this. Active mass मतलब concentration. Active mass means concentration, moles per liter.
All right. कुछ steps लिख पाए? Yes, sir. क्या क्या आ रहा है? चलो मुझे बताओ. What is it that you are able to write? First of all, the So equation. पहले equation COCl2 CO plus Cl. Okay, CO plus Cl2. Then फिर initial moles of COCl2 milligram. okay, initial 4. So then इसका वो variable and Cl2 का we know the concentration and we know the volume, so we can find the number of moles of Cl2. No, but what I'm asking is that ये जो 4 moles of COCl2 dissociates in a 20-liter vessel. तो ये जो 4 moles दिया है, is it initial equilibrium or is it initial like initial start एकदम? Initial. So this is basically your start. And at the start, there is nothing of CO and Cl2. Equilibrium पे बोला जा रहा है that there is something of Cl2. तो ये minus x. I should not choose x. X is being A ले लो. minus a plus a plus a. Yes. तो ये क्या हो जाएगा? 4 minus a and a. Yes. And a is equal to how much? a upon 20.1. 2. तो यहाँ से आपको kc का वैल्यू मिल जाएगा. Yes. ठीक है. अब इसके बाद में बोला जाता है there is this disturbance that is happening. This is the disturbance. Yes. So how do I then deal with this? So then disturbance. Volume is halved and 1/10 m is Volume is doubled. ठीक है. तो यहाँ पर आप disturbance नोट करना. ठीक है. Disturbance volume को कोई फर्क वॉल्यूम चेंज करने से अचानक से COCl2 के मोल्स चेंज हो जाएंगे क्या? No sir. no, so moles में नहीं. मोल्स पे नहीं आएगा. ठीक है. मोल्स में ओनली द थिंग दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इज अचानक से CO के मोल्स ऐड हो गए, है ना? Yes sir. फिर आप शिफ्ट लिखोगे. शिफ्ट किधर जाएगा? वेल, वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ यानी कि प्रेशर कम कर रहा हूँ तो मोर मोल्स फॉरवर्ड की तरफ बोल रहा है ये तो. Oh yes sir. एंड x मोल्स ऑफ CO ऐड कर रहा हूँ तो ये बैकवर्ड की तरफ बोल रहा है, राइट? Yes. So I don't know exactly, but ठीक है. I don't need to be bothered about it. मैं जो लूंगा, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है उसका तो ठीक है, माय असम्पशन वाज करेक्ट. अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो मींस मेरे को उल्टा शिफ्ट लेना चाहिए था, है ना? Yes, sir. So ठीक है. I'll not be worried. I'll just simply say shift happen forward. ठीक है. तो यानी कि माइनस y प्लस y प्लस y, तो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा 4 माइनस a माइनस y, है ना? a प्लस x माइनस y एंड a प्लस y. तो आप इसे concentration यूज करके कर सकते हैं. हाँ, Sir, a plus x plus y, no? So for a plus x CO. plus y, correct. Now you have two variables. How do you solve for them? So you have concentration of COCl2. Right. So 1 by 16 will be concentration of COCl2, which will be 4 minus a minus y upon. यहाँ पे careless mistake students make कर देंगे. आपको नया वॉल्यूम लिखना रहेगा ना? Yes sir. The new volume is 40. डबल हो गया ना वॉल्यूम? Yes, sir. Yes sir. Okay. And the other equation will be from Kc. Yes. A minus y into a plus x plus y upon 4 minus a minus y into 1 by 40 will be equal to a into a upon 4 minus a into 1 by 20. तो यहाँ से आपको solve x and y. ठीक है. a तो एक्चुअली पहले था, इसे ऊपर अपन ने निकाल लिया था. पॉइंट a का वैल्यू 2 आ रहा था. ठीक है. समझ में आया? These are all the difficult questions that I had asked you to solve because I believe इनमें आपको inevitably doubt आते ही आते. But I hope you got clarity in terms of how to work with those questions, the approach. Yes, sir. Yes sir. There is no substitute for your effort.
आप मुझसे 100 या 500 क्वेश्चन और करा लोगे तो भी उतनी लर्निंग नहीं आ पाएगी जितनी खुद से आएगी सॉल्व करके, ठीक है. सो डोंट थिंक ऑफ दिस इज समथिंग, ये दिस वाज मोर ऑफ अ लाइक desperate attempt from my side to at least make you practice something, Yes. because if you're not practicing by yourself then फायदा नहीं होगा. So please make sure that you are working on it regularly. Yes. चलो, all right then, आज के लिए तो डिस्कशन काफी है. See you in the next class. Take care. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.